अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनटीएस का फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम जो कि 3 सितंबर 2023 को हुआ है। और उसके जो मेजर एमसीक्यूज़ हैं कि किस तरह का पैटर्न था, क्या मार्किंग थी और कौन कौन से एमसीक्यूज़ थे और उनके पॉसिबल क्या करेक्ट आंसर्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम देखें पेपर पैटर्न के हवाले से, तो जो पेपर पैटर्न था उसके अंदर 100 एमसीक्यूज़ थे, जिसमें से 60 एमसीक्यूज़ डीपीटी के कोर्स में से थे और 40 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ द कोर्स थे। जो हमारे पास 40 एमसीक्यूज़ अदर देन द कोर्स थे, उसके अंदर 10 एमसीक्यूज़ थे 4 एरियाज से, जिसमें नंबर 1 था इंग्लिश, देन एनालिटिकल एंड कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव। इंस्ट्रक्शंस के अंदर मेंशन था कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसके अंदर जिस तरह पीपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सो 60 एमसीक्यूज वर फ्रॉम द कोर्स एंड 40 एमसीक्यूज वर फ्रॉम इंग्लिश, एनालिटिकल, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फील्ड रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि हमारे कोर्स से आए थे, और उसके बाद जब वो 60 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद हम बाकी 40 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। The first MCQs was ventral is also known as posterior, superior, inferior और anterior। ये बेसिकली एनाटमी रिलेटेड MCQs हैं जो कि जनरल एनाटमी के अंदर पढ़े जाते हैं। सो anterior is also known as ventral और vice versa, ventral is known as anterior। MCQ number 2 was when labeling a structure close or away from the midline of the body, which terms are used? Options were inferior and superior, medial and lateral, Inferomedial and lateral, and none of these। And the correct option was medial and lateral। कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के मिड लाइन के करीब है, दैट इज़ मीडियल, और जो दूर है मिड लाइन से, दैट इज़ lateral। MCQ number 3 was the shoulder is dash to arm, distal, proximal, inferior और none of these। तो जोन सा स्ट्रक्चर हमारे पास हमारे करीब होता है बॉडी के सेंटर के, दैट इज़ नॉन एज प्रॉक्सिमल, और जो स्ट्रक्चर हमारे पास दूर होता है दैट इज़ नॉन एज डिस्टल। तो शोल्डर एज़ कम्पेयर टू आर्म हमारे करीब है बॉडी के, सो दैट इज़ प्रॉक्सिमल। एंड अगर ये हम आर्म की बात करते हैं कि आर्म इज़ डैश टू शोल्डर, तो आता आर्म इज़ डिस्टल टू द शोल्डर। MCQ नंबर 4 was the toe is dash to heel, superior, inferior, anterior और posterior। तो अगर हम anatomical position के अंदर देखें तो the toe is anterior to heel। Next MCQ was the study of structure and morphology is known as, options were anatomy, physiology, biochemistry and cytology, and the correct option was obviously anatomy। Next MCQ was the study of normal functioning of human body is, options were anatomy, physiology, biochemistry and none of these, and the correct option is physiology। MCQ number 7 was the microscopic study of tissues is known as, options were histology, anatomy, cytology or biochemistry, and the correct option was histology। Next MCQ was the cytology is a branch of anatomy, surgery or biochemistry and physiology। मेरे मुताबिक इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटमी, बट आई कैन बी रॉन्ग। तो अगर इसका कोई और आंसर था और अगर कोई श्योर है कि हाँ इसका इनके सर्जरी है या बायोकेमिस्ट्री है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं इसको करेक्ट कर दूँगा। MCQ number 9 was which of the following is a correct order? Options were organ, tissue, cell system, cell, organ, tissue system, and cell, tissue, organ system, or none of these. And the correct option is cell. That cells make up the tissues make up the organ, and the organs make up the system. So the correct option was C. Next MCQ was the hamstrings action is. Options are extension of knee, flexion of hip, or none of these. And the correct option was flexion of knee. Next MCQ was the neck movements take place on which type of the synovial joint? Either it is hinge, pivot, gliding and ball of socket। इसकी जो स्टेटमेंट थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी कि ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जो वर्टिब्रल मूवमेंट्स हैं उनका पूछना चाह रहे हैं या जो हमारे पास एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट्स के ऊपर नेक की फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है वो पूछना चाह रहे हैं। सो इन माय ओपिनियन इट इज़ पिवट जॉइंट, अगर हम नेक की फ्लेक्शन एक्सटेंशन और साइड रोटेशंस की बात करें। लेकिन अगर हम ऑब्वियसली बात करेंगे कि नेक के उस पे मूवमेंट्स क्या हो रही हैं वर्टिब्रास पे, तो दैट could be the gliding movements। According to me it is pivot, but if the correct option was something else, do let us know। Next MCQ was the pulse pressure is increased in, options were tachycardia, hypertension, aortic stenosis or hemorrhage। And in my opinion the correct option was hypertension, कि जिस तरह ब्लड प्रेशर बढ़ता है
तो ब्लड प्रेशर के साथ साथ पल्स प्रेशर भी बढ़ता है, बट आई वाज अ बिट कंफ्यूज बिटवीन द टैकीकार्डिया और द हाइपरटेंशन. So if the correct option is hypertension, then the option is correct. This MCQ is correctly labeled. But if it was tachycardia, then do let us know in the comment section. Next MCQ was a patient is in shock with a BP of 50 mmHg. Which of the following is responsible for compensatory increase in his BP? एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज बैरो-रिसेप्टर रिफ्लेक्स, कि ये हमारे पास एक रिफ्लेक्स है जो कि कैरोटिड आर्टरीज के अंदर हमारे पास रिसेप्टर्स हैं दैट सेंस प्रेशर. सो द करेक्ट ऑप्शन वाज बैरो-रिसेप्टर रिफ्लेक्स. Next MCQ was which splint is used for the button ear deformity. Options were oval-eared splint, thumb splint, and there were two different names of the splint. And I have forgotten the name. So if you remember the names of the splint, do let us know. And also, I'm not sure about the correct answer of this. So if you know, do let us know in the comment section. Next MCQ was all of the following are correct for the cerebellum output except options were it is always inhibitory. Option B stimulation is increased with the stimulation of climbing fibers. Option C all output passes from the deep cerebellar nuclei. And there was another option D, and to my opinion it was correct. So the incorrect option, the incorrect feature of output of cerebellum is option number A. It is not always inhibitory, it can be excitatory as well. Next MCQ was the wrong movements at a joint can lead to. uh, Options were like this: the less load on joints or easy movements. And I think and जो options थी वो थोड़े different थी, लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज इंजरी एंड डिफॉर्मिटी, कि अगर आप एक जॉइंट के ऊपर रॉन्ग पैटर्न पे मूवमेंट्स कर रहे हैं तो दैट कैन लीड टू रॉन्ग इंजरी एंड डिफॉर्मिटी. नेक्स्ट एमसीक्यू वाज लेस टॉर्क इज प्रोड्यूस व्हेन, मेरे मुझे इस वक्त जो स्टेटमेंट रिकॉल हो रही है वो कुछ इसी तरह से थी, और जो ऑप्शन थे वो ये थे कि इफ़ द वेट इज़ क्लोजर टू द जॉइंट वर्टिकली और वेट इज़ फार फ्रॉम द जॉइंट वर्टिकली और क्लोजर टू द जॉइंट हॉरिजेंटली एंड फार फ्रॉम द जॉइंट हॉरिजेंटली. तो ये इसकी जो स्टेटमेंट है उसको पिक करने में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो इसी वजह से मुझे करेक्ट ऑप्शन के बारे में भी श्योरिटी नहीं है. तो अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से किसी को पता है कि इसकी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी वो क्या थी और करेक्ट ऑप्शन क्या था, तो डू लेट अस नो. MCQ number 18 was for severe deformity after amputation that is used, dash is used. Options were pleoites, foam and rubber pads, splints. एंड इसके अंदर स्टेटमेंट सिर्फ एक लाइन की थी और क्लियर कट नहीं बताया गया था कि एम्पुटेशन कौन सी हुई है. आइदर इट इज़ अ लो लेवल एम्पुटेशन, बिलो नी एम्पुटेशन है, या फिंगर्स की एम्पुटेशन है, हैंड्स की एम्पुटेशन है. सो आई वाज नॉट श्योर कि इसका करेक्ट आंसर क्या था, बट आई टेक स्प्लिंट्स. बट आपके व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, ये ऑप्शन कुछ और थी. तो अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट आपको करेक्टली याद है, कुछ और स्टेटमेंट थी या उसका ऑप्शन कुछ और था, तो डू लेट अस नो. Next MCQ was all of the following are correct for managing bed sores except, or options were use of donut cushions, option use of sheep skins and padded forms, keep skin clean and dry, or change position after every 2 hours. तो माय नॉलेज जो लास्ट थ्री ऑप्शंस हैं ये तीनों ठीक हैं जी, हम यूज़ करते हैं बेड सोर्स के मैनेजमेंट में, लेकिन जो डोनट कुशंस है उसको मना किया जाता है. डोनट कुशन हम बेसिकली कॉक्सीजियल स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बेड सोर्स के अंदर जहाँ तक बुक्स में मैंने पढ़ा है कि अगर बेड सोर्स हैं और आप डोनट कुशंस यूज़ कर रहे हैं तो ये बेड सोर्स को फर्दर एग्रावेट कर देते हैं बजाय इसके कि उसको रिलीव करें. Next MCQ was use of pleoites, water bottles and blankets comes under the category of. Options were electrotherapy, manual therapy, thermotherapy, or none of these. And the correct option was thermotherapy. Next MCQ was which of the following muscles are most abundant in human body? Options were smooth muscles, skeletal muscles, cardiac muscles, or none of these. And the correct option was skeletal muscles. Next MCQ was which of the following muscles are voluntary in nature? We all know that the cardiac muscles are the skeletal muscles are voluntary in nature, and but they did not mention about the skeletal muscle. They mentioned either they are striated or non-striated. So we all know that the skeletal muscles are striated in nature. So the option C was correct, that striated muscles or skeletal muscles are the most abundant and as well as voluntary in nature. Next MCQ was damage to left somatosensory cortex of a patient will result in. Options were left loss of left side pain and thermal sensations, contralateral loss of pain and thermal sensations, ipsilateral loss of sensations, or none of these. And the correct option was contralateral loss of pain and thermal sensations. As we all know कि जो हमारे cerebral hemispheres हैं
ये बॉडी के ऑपोजिट पार्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर राइट हेमिस्फेयर है तो वो लेफ्ट साइड की सेंसेशंस को कंट्रोल कर रहा है, और अगर लेफ्ट हेमिस्फेयर है तो वो राइट साइड की सेंसेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हमारे पास सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स का डैमेज है तो जो ऑपोजिट साइड की हमारी पेन और थर्मल सेंसेशंस आ रही हैं, ये सारी हमारी लॉस हो जाएंगी। Next MCQ was, which of the following areas of human body have highest representation in somatosensory cortex? Options were limbs, lips, tongue और thorax. इसके अंदर जो हमें गाइड एंड फिजियोलॉजी देखें तो उसके अंदर हमें ह्यूमनकुलस मिलता है, जहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की सोमेटोसेंसरी एरिया में। एज फार एज आई नो तो हैंड्स और फेस की जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा है। आई कलेक्ट द लिम, बट इफ़ द ऑप्शंस वर हैंड और फेस, आई थिंक दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन. Next MCQ was, the structures of the body which are at the same side are called as. Options were contralateral, ipsilateral, proximal, or none of these. And the correct answer was ipsilateral. ये basically again general anatomy या काइनेजियोलॉजी से रिलेटेड सवाल हैं कि अगर सेम साइड की बात करें तो इप्सिलेटरल है, और अगर ऑपोजिट साइड की बात करें तो दैट इज कॉन्ट्रालेटरल. Next MCQ was, blood is a. Options were organ, tissue, cell, or system. As we all know that blood is a type of connective tissue, so the tissue was the correct option. Next MCQ was, the most important structure in the cell is. Options are water, lipid, electrolyte, or none of these. I don't know the correct answer of this MCQ. Maybe it is water or it can be lipid. So if you are sure about the answer, please do let us know in the comment section. Next MCQ was, the muscle contraction in which the muscle neither shortens or lengthens is known as. Options were isotonic, isometric, concentric, or eccentric. And the correct option was option बी आइसोमेट्रिक. सो अगर मसल की हमारे पास लेंथ चेंज नहीं हो रही, दैट इज़ नोन एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और अगर लेंथ चेंज हो रही है तो दैट इज़ नोन एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, और अगर लेंथ शॉर्ट हो रही है सो इट इज़ अ सब टाइप ऑफ आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और अगर लेंथ ज़्यादा हो रही है तो इट इज़ इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. Next MCQ was, interval trainings are used for strength, endurance, muscle flexibility, or none of these. And the correct option was endurance, कि ये endurance को build करने के लिए हम interval trainings use करते हैं. Next MCQ was, interval trainings are planned daily, weekly, monthly और annually. As far as I know, जो हमारे पास interval trainings हैं ये weekly plan होती हैं, लेकिन I'm not 100% sure that it is weekly. So if you know about this, कि either it is planned daily, weekly, monthly or annually, do let us know in the comment section. So these were the first 30 MCQs of the NTS papers from the MCQs which were from our course outline. Next MCQs, next 30 MCQs will be shared in the part 2 of this video, and in the third part we'll be discussing the 40 MCQs related to computer knowledge, quantitative, analytical, and English language. If you haven't subscribed our channel before, please hit the subscribe button. And if you have any questions or any suggestions for us, do let us know in the comment section. Inshallah, we'll meet in the next video. Take care. Allah Hafiz.